Okay students, so today we are going to solve page number 16. Till yesterday we have done our work till page number 15. Now today we are going to solve page number 16. So first you have to write the date on the top of the page and class work. You have to do this work on the top of every page, and I will not mention you that you have to, I will not mention on every page that you have to do this work. You should know that you have to do this work by your own self. Okay, so हर पेज पे आपको डेट और क्लास वर्क मेंशन करना है. ओके, या होमवर्क है तो होमवर्क मेंशन करना है. ओके, सो द क्वेश्चन इज सम फूड आइटम्स एंड द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दे कंटेन आर शोन. विच आइटम हैज़ द मोस्ट कैलोरीज. अच्छा, यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स हैं और उसमें लिखा हुआ है कि कितनी और हर सबकी कैलोरीज लिखी हुई है कि कितने किस आइटम की कितनी कैलोरीज है. अब आपको ये बताना है कि विच आइटम हैज़ द मोस्ट कैलोरीज. ओके, सो हेयर इज पीनट बटर 1520 कैलोरीज पर कप. हेयर चॉकलेट आइसक्रीम 286 कैलोरीज पर कप. हेयर मैकेडेमिया नट्स 959 कैलोरीज पर कप. सो लुक, ये 1000 में है, ये 100 नंबर है, ये भी 100 नंबर है. सो ऑब्वियसली 1000 नंबर बिगर होता है इन दोनों से. सो ऑब्वियसली द अ कप, सो ये सबसे ज़्यादा कैलोरीज कंटेन करता है पीनट बटर मीन्स. सो अ कप ऑफ पीनट बटर हैज़ द मोस्ट कैलोरीज. यू विल राइट पीनट बटर हेयर. यू विल राइट दिस पीनट बटर हेयर. ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 17 what you have to do, here is the review. use this page is the review एंड पेज नंबर 18 जो नेक्स्ट पेज है वो भी रिव्यू ही है. सो ये दोनों पेज नंबर 17 एंड 18 यू हैव टू डू इन द होमवर्क. रिव्यू क्या है, जितना भी हमने अभी पिछला काम किया है, जितने भी पेजेस किए हैं उन सब का रिव्यू है. सो यू कैन सॉल्व दीज 2 पेजेस बाय योर ओन सेल्फ. पेज नंबर 17 एंड 18. ओके, सो now we are on page number 19. So page number 17 and 18 are our homework, and we are on page number 19. So what we have to do on page number 19, addition and subtraction within 10,000. obviously addition subtraction सबको आती है. हम लोग 2-3 साल से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन. बट what is the difference between the previous grade addition and this grade addition? So 10,000 मेरे I think till the previous grade you have done the addition till 1000 numbers. Now you will have a 5-digit number and you have to add them. It's very easy. The procedure is same. The procedure is same. Okay, जैसे कि पहले हम एडिशन करते थे वैसे ही प्रोसीजर होगा सेम, बस एक नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा होगा. ओके, अच्छा अभी तो खैर 1000 नंबर ही है. 1 2 3 4 1 10 100 1000. अभी तो 1000 नंबर ही है, बट आगे 10,000 नंबर ही आएंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि व्हाट प्लेस कम्स आफ्टर द प्लेस ऑफ 1000. द प्लेस कम्स आफ्टर द प्लेस ऑफ 1000 इज 10,000. बट हेयर वी हैव 4-digit नंबर मीन्स 1000 नंबर. 1s 10s 100 1000, and we have to add it in a 2-digit number. So it's a very easy work. We can solve it easily. Okay, so what we have to do, 6 plus 3 नंबर ए है 2306 को हमें ऐड करना है 93 में. सो 6 plus 3 6 7 8 9. so obviously we will write 9 here. Now here is 0 plus 9. obviously 9 0 में जब हम 9 प्लस करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. so it becomes 9. again we got 9. now 3, there is no number under 3, so we will write 3 as it is, and there is no number under 2, so we will write 2 as it is. so the answer is 2399. now just like this, question number B is, now we have 2-digit number on the top of the question, and here we have 4-digit number. so the procedure is same. Addition procedure is always same. Okay, so 8 plus 0 is equal to 8. 4 plus 5 4 5 6 7 8 9. so we will write 9. 2, there is no number on the top of the 2, so we will write 2 here as it is, and 8 as it is because there is no number. And this is your answer, 8298. just like this. number C, 0 plus 0 0 plus 2 plus 1 3, पता है सबको. 0 plus 9
9 यहाँ पे बताया था 0 + 9 9 एंड 3 के नीचे बिकॉज कोई नंबर नहीं है 3 एज इट इज़ आ जाएगा. सो 3930 जस्ट लाइक दिस. नंबर डी 3 and 5 3 4 5 6 7 8. We have added 3 and 5 and we got 8. Now we will add 1 and 7. 1 में हमें 7 प्लस करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. So it becomes 8. Again we got 8. 4 + 5 4 5 6 7 8 9 10 9 sorry 5 6 7 8 9. ये हमारे पास 5 हो गए एंड इट बिकम्स 9. ओके एंड 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है सो 5 ऐसे ही आ जाएगा. ओके नाउ 1 and 2 3 0 and 9 9 3 and 6 3 4 5 6 7 8 9. It becomes 9 4 5 6 7 8 9. 4 में 5 ऐड किया it becomes 9. So 9993 आंसर आ गया. Now 4 + 2 5 6 6 3 + 6 3 4 5 6 7 8 9 9 sorry it becomes 9. 2 + 1 3 4 + 1 5 5396 answer. Now we are on page number 20. So what we have to do on page number 20? Add. Show your working in the space provided. Okay, now here they gave us the numbers in our horizontal manner and we have to write them and then we have to add them and then we will write the answer here. So first here इधर तो इन्होंने वर्किंग करके दी है ऐसे करके, बट यहाँ पे हमें वर्किंग खुद करनी है इस तरीके से और फिर इन्हें ऐड करना है. जैसे इन्होंने ये लिख के दिया है इस तरह से. पहले आप इधर ऊपर 8644 लिखेंगे, देन 1210 लिखेंगे एंड देन उनको ऐड करेंगे. इधर भी आंसर लिखेंगे और इधर भी आंसर लिखेंगे. अब जैसे इनको ऐड हमने किया 1 + 5 6 3 + 0 3 2 + 6 2 4 2 3 4 5 6 7 8. सो इट बिकम्स 8 and 4 एज इट इज़ आ जाएगा. सो ये जैसे आपके यहाँ पे आंसर आएगा वैसे ही आप इसको इधर भी लिख देंगे 4836. ओके 4836. जस्ट लाइक दिस you will write this, then under this you will write this and then you will add them and then write the answer here and here just like this in question number C as well. Now on question number 3 what you have to do, find the sum of each pair of numbers. Okay, this question you will solve in the copy. This question because यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है बहुत ज़्यादा जिसको आप सॉल्व करके, क्योंकि तो आपको इसको ऐड करना होगा रफ में और फिर जो भी आंसर है वो आप यहाँ पे लिख देंगे. रफ में आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे. 9143 एंड 52 उसके नीचे लिखा और इसको ऐड कर दिया. 3 + 2 5 4 + 5 9 1 9. सो ये आपका आंसर आ जाएगा और फिर आप एज इट इज़ आंसर इधर लिख देंगे. बट बिकॉज वी डोंट हैव a lot of space here, so we will solve it in the copy and then write the answers here. Okay, and इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. So this page is your homework. Write homework and date on the top of the page. Okay, page number 20 is your homework. Because today is Friday, so that's why I am giving you 3 pages in the homework. Okay, 3 pages in the homework. That 2 review pages and 1 page is this. Okay, so you have 3 days, you can do it easily. Okay, so now we are on page number 21. Write down date here. Okay, so we are on page number 21 now. You have written the date, so let's start the work. Okay, 2 + 9. Okay, now we have carry sums on this page. You know what are carry sums? I know that you know, but I will explain you again. Okay, so 2 + 9 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So it becomes 11. Obviously 11 is a 2-digit number, so we will write 1 here and carry 1 on the another number. We will carry 1 here and circle the carry, ताकि प्रॉपर नंबर्स के बीच में और कैरी के बीच में डिफरेंस पता चले, इसलिए हम सर्कल करते हैं कैरी को. ओके, now we will add them. 0 + 4 0 and when we will add 1 in it, 0 + 4 4 and when we will add 0 + 4 4 and when we will add 1 in it, it becomes 5. So we will write 5 here. Now there is no number on 2, so we will write 2 as it is and 7 as it is because there is no number
under 7. Okay, so it becomes 7251. Now we have to add them. Okay, 7 plus 3, 7, 8, 9, 10. We will write 0 here and carry 1 on the top of the another number, and again we will circle the carry. Okay, नाउ 9 प्लस 7, पहले हम इन्हीं नंबर्स को ऐड करेंगे एंड देन एंड में हम कैरी प्लस करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. ओके, फर्स्ट वी विल ऐड 9 एंड 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ये तो हो गए हमारे 16 एंड व्हेन वी विल ऐड 1 इन इट बिकम्स 17. 7 we will write here and 1 again carry on the another number because 17 is also a 2-digit number. Now we have 2 and we have no numbers under 2 but we have a carry on the top of the 2. So we will add 1 in 2. So it becomes 2 plus 1 is equal to 3. And 5, there is no number under 5. So we will write 5 here as it is. So it becomes 5370. Now we are on question number C. What we have to do on question number C? We have to do the same work on question number C. 3 plus 9. 3 plus 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So when we add 3, 9 and 3, we got 12. 12 is a 2-digit number, so we will write 2 here and carry 1 on the top of the and other number. Okay, so 9 plus 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and when we will add carry in it becomes 16. So we will write 6 here and 1 on the top of the 2. Now we will add 2 and 4, 2, 3, 4, 5, 6, it becomes 6, and when we will add carry in it becomes 7. Now 2, there is no number under the 2 and there is no carry on the top of the 2, so 2 we will write 2 as it is. So it becomes 2762. Now we are on question number D. So 1 and 8 or 8 and 1. So 8 and 1, 9. So we will write 9 here, 3 and 7. So 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So it becomes 10, a 2-digit number. So we will write 0 here and 1 carry on the top of the another line. Okay. Now 4 and 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. It becomes 13, and when we will add carry in it becomes 14. Now 4 and 1. It becomes 5. So we have solved 4 questions A, B, C, D. Okay, now in the P unit break you have to solve E, F, G and H. In the P unit break you have to solve E, F, G and H by your own self. Okay, so it's your classwork, 25 September classwork. Don't forget to mention classwork, homework and date on the top of every page. Okay, so students, I hope that you enjoyed learning with me. Today we have learnt addition. Inshallah, when you will practice again and again and you will do homework, you will understand addition very well, inshallah. So don't forget to do your homework and don't forget to complete your classwork in the P unit break. You have 3 days to do your homework. I gave you 3 pages in the homework, and because you have 3 days to complete, so you can easily complete your homework. Okay, 3-page homework. Okay. Thanks for joining me. Jazakallah. Allah Hafiz.